we need to have startup policy, which basically has to be a wide range policy where even a normal person in a tier 2 or tier 3 city, if he's starting a venture. Dr. Srinivas, I have the data. It shows that out of 3, one startup is working in healthcare sector. It is not IT sector, right? I have the data according to the report published by the Government of India. So what I'm trying to focus is that the more focus is towards IT oriented. 33% is going towards health sector, right? It is not IT sector. It is not IT sector. Sir, if you see this, basically Zomato, if you see basically Swiggy, if you see Paytm, they are all ultimately aggregators using information technology as a key tool to get valuation. See, what I'm trying to focus is that suppose we take a simple example. In a small city like Surat or Viara, a rural area, if somebody is starting a small business venture and if it is giving jobs to 25 people at that local level, why it should not be funded? Why it should be deprived of funding? Why only the so-called startups should be getting billions of dollars when they are not profitable at all? If you see Zomato, basically it is they themselves are telling it will take 3 to 4 years to become profitable. And we have seen in both the cases how the prices have crashed out. So whom are we trying to basically give valuation? Only the promoter gets richer and the richer. Okay. I think Dr. Abrar Ali want to add something there. I think, sir, it's a very one-sided view. I agree with that. No, there is a lots of focus is on top business schools or institutions and promoting startups coming out of that. But I think now, if you look at the last few years data, the lots of startups are also coming from Tier B, Tier 2, Tier 3 cities. The recent example of the Shark Tank series, you can see that lots of startups are coming, innovative startups also Tier 2, Tier 3 cities. I think ecosystem evolves over the period of time. I think this huge funding really attracted lots of large pool of students coming from engineering and management schools, and then they actually got attracted to this startup and entrepreneurship kind of ventures. So I think we should also appreciate that this ecosystem really is helping slowly. But I think I wanted to highlight here the NABARD also is going to facilitate. Yes. Dr. Abrar Ali said, let us go to Dr. Shariq Nisar. He has been an economist as well. So you already highlighted in your first views when you were sharing that there should be something done towards increasing employment level, right? So what do you suggest? What government can do for increasing the employment level in India? I have a little different perspective in this context, for the reason that the subject is budget, and we are not only focusing on one sector, whether it is IT or entrepreneurship. So I would always look at this discussion today, while other things highlighted by my fellow colleagues are very important. I would like to see everything in the context of budget, what it does, how it does, which sector it does, etc., etc. Now, looking at that, if you look at the, and you can always look at government philosophy, one thing, government constraints on the other thing, and the action proposed in this budget is one thing. Now, government's philosophy has always been in the sense that government has no business to be in business. And government has always argued that we would like government to be out of business, and so that it can be businesses can be given to people who are more efficient and more capable of running businesses. And that was the philosophy behind government's attempt to privatize things, whether it is public sector banks or financial institutions or other things. So government philosophy has been more of getting itself out from the business activity. That is one. Now, if you look at the context in which private sector is not coming forward to make investments, if you look at, and private sector has also not been helpful in creating employment, where the government has found itself on a very sticky wicket. There has been net outflow of people from urban areas to rural areas. So there has been increased rural employment in that sense, then urban employment, etc. Now, in this budget, government had no option but to pitch in the place of private sector. Now, if private sector is not feeling confident of investing money and therefore creating employment, government thought that, and government was well advised that it should pitch in to create more capital, create more opportunity for capital expenditure,
so that private crowding in, that the term is being used, that once the economy is on faster track, private investment class will also be encouraged to pitch in to create employment. So at the moment, government is actually going against its own philosophy of privatization and trying to create employment through its own capital expenditure kind of argument. And that, I think, is a right approach in the context in which we are finding ourselves at the moment. So it means you are saying that government of India has done has taken a good enough and good efforts to increase the employment and to keep the economy back on the track after the crisis. Do you agree with this? That is what I would not say the government has done enough, because as I said, that there is a context to it. Where is the capability for government to do all these things? Government doesn't have resources. You look at our revenue expenditure. 40% of our revenue is going for only interest payment. So where is the government is going to borrow lakhs of crores, 2 lakh crore extra from the market? What will happen to interest rate? What will happen? Now government is also encouraging states to borrow. So these things are there. But again, I'm saying that I have sympathies for the government, because government has no other option but to explore this option, because there is no other way to look at. Okay. In view of the crisis which we have been going on since last 2-3 years, am I right? Yes, in the crisis, and also because some other steps that government took, which didn't prove government's action to be right. For example, we were already carrying baggage of demonetization, and we were already struggling with GST implementation. So it is not that the Indian economy suddenly went down during the COVID period. We have been, we had experienced 4 quarters negative growth or declining growth even before the onset of COVID. So we didn't have enough opportunity, and we thought that things will turn out good, which didn't happen, and therefore we have no option but to try all our at our level to bridge in the gap and to pitch in for on behalf of the private sector. Right. Dr. Aditya Srinivas, there has been a lot of discussion related to global value chain, and we expect and we want to project India to be one of the important or key player in global value chain. So what is all about this? What is this global value chain all about? See, basically, if you talk, the focus of the government, even during this budget and in general, has been to make India one of the manufacturing hubs, so that the supply chain which got disrupted this time because of COVID-19, which started from China. See, China is a major manufacturing hub at the global level. In fact, 53% of Chinese GDP comes from manufacturing. So here the focus was, can we basically steal this opportunity from China, and can we project ourselves as one of the best manufacturing bases in the world? So there the objective of government is to increase the share of manufacturing from 15% to 25%, so that 3 things happen. One, it creates lakhs of jobs at the grassroots level, because in manufacturing you can deploy people even with lower level of qualification. In the service sector, purely driven economy, qualified people get more job opportunities as per a normal traditional economic sense. Second, it creates brand image of India, and third, basically it helps us to reduce our import bill also. Now here, to be very frank, government is trying, but as we said, that the ammunition of the government itself is limited. If you see the total allocation of 39 lakh crore rupees in the budget, 9 lakh crore has been paid only for interest payments. So you can imagine the kind of situation we are into. 9 lakh crore. After that, 3.85 lakh crore, which is the highest allocation, goes to defense, and 3,17,000 crore basically goes to subsidies in agriculture and crude oil. So the whole issue here is that the ammunition of the government itself was limited, and that is why basically what they are trying to project is that this is a foundation laying budget. It is foundation laying budget for coming decades. But it is survival of the fittest, because if you don't survive today, what will you do with the golden tomorrow, which is never going to come for an entity which is no longer surviving? So here one has to understand that with limited means and opportunities, yes, they are trying, but at the same time, I would really feel that basically it requires much more effort at the grassroots level, then we will be able to come out of all this mess. It's not that easy. Right. Dr. Abrar Ali Saiyed, as you have spoken related to MSMEs and entrepreneurship, the government of India has announced 7 lakh crore towards the emergency credit line guarantee scheme.
right? So what do you expect, with this credit line? What could be the impacts on MSME and even micro, sector and unorganized sector? I think it's an interesting thing what they came up with. But my only concern is if you look at the budget details, they actually reduce the lots of budget allocation from Spurti scheme and then Aspire scheme. So mostly these are the schemes where actually promoting entrepreneurship in rural areas and also areas like Khadi and lots of other cottage industries. So my concern is they are taking away all the money from this kind of schemes and putting in one basket. And again, we don't know how the allocation has been done. I did a research during COVID, and I found that only very few entrepreneurs could get this key benefit of this scheme, guarantee emergency credit line during COVID. So I'm really not sure. I'm not very sure that how they are going to allocate. How many people? What could be the problem? Is it the problem from the side of the government, or the problem from the side of the entrepreneurs who are in that industry and unable to tap out I think it's both the schemes, various schemes made by the government or announced by the government? What could be the problem? The first is, I think during COVID, I think through Rifah, we talked about the scheme and asked people to take the benefit of this. When they reached to SIDB, they were not supported properly. So I think it's very important, and the documentation, lots of other requirements are there. They were not clear. So we have seen that large MSMEs, those who have a good amount of profits and connections, they could avail. During my research also I found, and those small MSMEs are really struggling because, and that is what I'm seeing, there's still not clarity. What are documentations are required, how the SIDB would support, and what are the, let us also take support from opinion of the Dr. Shariq Nisar, because he is associated with some of the institutions and organizations which are working in unorganized sector, especially financing. So Dr. Shariq Nisar, what is your take on this? What are the problems why these MSMEs and micro sector entrepreneurs could not avail the benefits which the government of India announced on various occasions? See, I'll go back to the period when government started or implementing GST, and immediately afterwards we had COVID. Now in these two big events, and we see there is an exodus of MSMEs from the business. Now MSMEs have gone out of business, and they are the employer of 90% of the people seeking job in the country. So formal sector is almost only 10% employer. Informal sector is 90% employer. Now, if 60 lakh MSMEs are going to get closed down, you can imagine the impact they were having on people's employment, business, and growth. Now, whosoever is left out, and why these MSMEs went out? Because they could not sustain themselves in the business. Now, whosoever is left out, they do not have the capacity to absorb all the people who have gone out of businesses. So on the face of it, those who are left out, they look that they are more formalized, and therefore government is looking at a better tax GDP ratio. But a lot of people have gone out of businesses, and because their income has been impacted, their expenditure has been impacted, and overall economic impact has been very demoralizing as far as private final consumption expenditure is concerned. So I think that it is not easy, even with the government is wanting, because a lot of people have gone out of the market, and it is very difficult to bring them in with whatever expenditure we might plan through public expenditure. Right, Dr. Srinivas, as there is economic theory of fiscal policy, that whenever there is an economy is in distress, the government will adopt an expansionary policy where it reduces taxes and it increases its social expenditure, right? But if you see the policy, especially tax policy announced by government of India in last two budgets, the tax income has increased, right? So do you find anything conflict to that standard theory in economics?
See, as far as basically the tax ratio is concerned, now our tax to GDP ratio has been at around 24%, which is even poorer than the global average. Number one. Number two, as Sir aptly said, a lot of MSMEs have shut down. See, here you have to understand that during this period of COVID, see which companies made a lot of profits. The companies which had digital platforms, the large in size. Even if you see globally, companies like Google, Alphabet, Amazon, their profits soared by 90%. And the same thing has been observed in our also. If you take BSE top 500 companies, on an average, their net profit went up by 17%. Was operational cost went down. Whereas in case of, if you see MSME and other things, they had problems related to working capital, migrant labor. The labor had gone to their own hometown villages, so there was problem related to labor, then compliance burden, and that is the reason, if you recollect, then in this 20 lakh crore rupees of economic package which government announced in the year 2020, April, May, June, 3 lakh crore was dedicatedly given to collateral-free loans for MSME, but you will be surprised, no MSME had come forward to take that loan because already their balance sheets were leveraged and they were finding it difficult to service their earlier debt loans. Then how they are in a position to take new loans? So obviously here we have to understand that MSME requires a lot of hand-holding. Number one is in compliance. See, compliance today is becoming a major hurdle in most of the businesses. So much of paperwork, so much of reporting that entrepreneur does not have time to basically focus on growth strategy, survival strategy. Rather, he's just busy filing audit reports and these things. So here that approach towards ease of doing business has to be practically implemented rather than just we are just trying to focus on getting ranks. But sir, I do agree with your opinion, whatever you have shared. But there is one point as well that this, especially unorganized sector and micro, economy or MSME sector, there even the institution themselves also do not care about the compliances very much. They don't have paperwork which is required, the minimum eligibility criteria, they will not be fulfilling that. So those administrative reasons also there why they could not have access to the fund which is allocated for them. So do you agree with this? Have you seen this type of issues? See, basically what happens is, if you actually visit an MSME entrepreneur, he will be basically from a tier 2, tier 3 cities, and in that expecting them to be up to date with an entrepreneur who is in Bombay, Hyderabad, Bangalore is not fair. See, that kind of person needs extra support because obviously their technical services in their localities are less, compliance experts are less, so they always try to do based on their own understanding in the limited resources in terms of intellectual capital and manpower capital what they have. So basically, if we just tell them that since you cannot upgrade, you won't get the facility, that will be to an extent an injustice to them because obviously they are weaker, that is why they are there. Had they been equally strong, they would have been in metro city. Wasiullah, I wanted to add here one point. I was coming to you, right? So I did a big research in Gujarat and I have to see the impact of different schemes in Gujarat, and it was funded by Gujarat government. And when we did a survey of 15,000 MSMEs, out of 45 schemes run by Gujarat government to support MSME, not a single scheme was availed by the MSME. And that actually, and during that time, I recommended that there's a district level industrial commissionerate office. They should actually have a post like calendar and with that scheme. So then they circulate or distribute those calendars every year on Diwali. They can have this list of the schemes that people can be aware about. They didn't do that. The report is still lying there. And they just wanted like procedural sting, but they don't. So I think the problem is not at the MSME level, but the government level. Are they willing to actually do the hand holding? That's what Dr. Srinivas was talking about. And I think that is what the major challenge is. I also did last year research on Muslim entrepreneurs. But so in that also, just let me come. But कहीं ना कहीं हमको accept तो करना पड़ेगा कि जो entrepreneurs हैं, वो लोग भी अपनी तरफ से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या प्रॉब्लम में होते हैं जिसकी वजह से वो एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि कंप्लीटली ब्लेम हम सिस्टम पर डाल दें. आई थिंक वसीउल्लाह पहले तो इकोसिस्टम भी होनी चाहिए ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए. गलती करेंगे तो कोई छोड़ देगा. द प्रॉब्लम इज व्हेन वी डिड रिसर्च ऑन मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स, दे हैव फियर. वो कहते हैं गवर्नमेंट के वहां जाएंगे, कुछ भी गड़बड़ हो गया तो देन वी विल बी इन ट्रबल. सो आई थिंक गवर्नमेंट शुड गिव कॉन्फिडेंस. इफ दे हैव, they are like, first when you want people to actually come forward and comply with you, then you should be little having more bigger heart
and a welcoming nature. Yes, you cannot just be having the stick and then treat people like you are school children. They're school children. So I think you have to be little more welcoming. That's what my point is. I think others can say, but this is what I'm saying. Right, I agree. I would like to go to Dr. Shariq Nisar sir. See, जो भी डिस्कशन अभी हो रहा है उसमें एक चीज तो ये आ रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से इको सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है. Do you agree to this point? If yes, then what about all the digitization, all the transparency which government is trying to bring through various, integrating all the process with technology? Is it not the, something which is, building the ecosystem to, have access and transparent access, easy as access to the schemes or funds or whatever you call it? So, what is your take on this? See, that's a very good question, I would believe. Sir, one request to speak in Hindi as well, because some of the participants are requesting for that. अच्छा, ठीक है. तो हमें एक चीज जो समझनी चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, वहाँ सिस्टम ये है कि गवर्नमेंट या लीडरशिप ये समझती है कि पब्लिक का भला कहाँ है वही ज़्यादा बेहतर जानते हैं पब्लिक से भी, तो वो उस हिसाब से स्कीम लेके आते हैं. अब वो स्कीम जो है अगर मेरे यहाँ फिट नहीं बैठती तो गवर्नमेंट कहती है कि हमने आपको दिया था सब कुछ लेकिन आपने खुद ही चूज नहीं किया. हालांकि मेरे जो पेन पॉइंट्स हैं, गवर्नमेंट के लिए आसान है अनाउंस करना कि हमने इतने लाख करोड़ जो है एसएमईज को कर दिया है, लेकिन एसएमईज जो पहले से ही परेशान है, उनके मार्जिन खराब हो रहे हैं, उनके बजट खराब हो रहे हैं, उनकी इंडेटेडनेस पहले से ही बढ़ी हुई है, वो कहाँ से और ज्यादा लोन लेंगे? तो वाइल गवर्नमेंट इज राइट ऑन इट्स ओन फ्रंट मेकिंग क्लेम कि हमने इतने पैसे अवेलेबल करा दिए, लेकिन लेने वालों को भी तो समझ में आना चाहिए कि वो उनके हित में है या उनके फायदे में है कि नहीं है. So there is a huge difference between what government think is good for the people and what people think that is good for people themselves. तो वो एक बड़ा चेंज है. हमारे यहाँ जो जैसा कि इशारा किया है डॉक्टर आदित्य श्रीनिवास ने कि गवर्नमेंट इज ओवरवेलमिंगली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल हु हैव लॉट ऑफ डेटा, who are IT driven, who are technocrats, बट उनका जो ग्राउंड लेवल का जो परसेप्शन है, जो ग्राउंड लेवल की जो इंफॉर्मेशन है, ग्राउंड की जो रिक्वायरमेंट है, वो इतनी परफेक्ट नहीं है, और इसकी वजह से जो गैप होता है पॉलिसी के बनाने में और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, वो काफी है. So government is creating policy and giving it to people and down the line to implement it, and which is not implementable in the sense of the ecosystem which is not there for implementing those policies. तो इस वजह से जो है वो हमारी पॉलिसीज जो है पेपर पे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उनको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो हम जो है न तो जिनके लिए पॉलिसी बना रहे हैं उनको भी समझ पा रहे हैं और उनको समझा भी नहीं पा रहे हैं कि ये उनके लिए बेहतर है जो हम बताना चाह रहे हैं. और सही बात ये भी है कि भलाई किसमें है वो लेने वाला ही ज्यादा बेहतर समझता है, न कि देने वाला. And Wasiullah, thank you very much, sir. Sorry, I wanted to make one last. I think this is my observation. Please. Other right. Two panelists can. I think this government is very anti-rural. I think the way अगर आप ये बजट में देखेंगे नरेगा को इन्होंने कम कर दिया उसका allocation. ये चाहते हैं कि लोग जाके जो घर चले गए थे, जो अपने गांव में बसे थे, जो नरेगा का बेनिफिट वो जाएं वापस इंडस्ट्री में. अर्बन, वेरी अर्बन फोकस. अगर आप देखें जो भी स्कीम्स है MSME की जिन्होंने इन्होंने बजट को कम किया है, I think if you look at this, all this, I think it gives you signal is very capitalist and very, very urbanized budget than the focus on the rural issues and the marginalized communities. If you look at that, I was expecting a lot is very holistic. A large number of people are still in rural parts of India. What they are going to do? Rural development maybe inka allocation bahut kam hai. So I think we also should understand that what government thinks is all urban and very capitalist view. I think we still need to have a little socialist view and have a holistic development perspective. So that's what is my observation is. But the data shows a different picture here. I have data on my screen. I was just wondering, as Dr. Shariq Nisar sir had said, that the most of the payment is going towards interest, but the third level where the expenditure is allocated is the agriculture sector. So I don't know how you are correlating it. After interest, it is the second highest. After interest and defense, it is the second highest where the government has allocated. Right? But look at Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Right.
I was just coming to you, sir. सर यहाँ पे ना सी पॉइंट क्या है ना कि जैसे सर ने एग्जैक्टली कहा, अपना अनाउंस करना एक बात है। से आप एक सिंपल चीज समझो ना, अगर ये पॉलिसी, अगर एमएसएमई कोई आप ले लो तो 3 लाख करोड़ रुपए के कोलैटरल फ्री लोन्स थे, देन व्हाई डिड एमएसएमई डिड नॉट गो एंड टेक इट? अरे भाई, जब मेरी बैलेंस शीट ऑलरेडी लिवरेज्ड है, मुझे करंट ईएमआई भरने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं नया लोन थोड़ी लूंगा भले आप मुझे दे रहे। मतलब ये ऐसा हो गया कि मैं पर्सन को डायबिटीज आ रहा, उसको वर्ल्ड की बेस्ट शुगर का ऑफर दे रहे हो। सी वो चीज उसके काम की ही नहीं है, तो आपको भले लग रहा है कि आपने उसको बेस्ट शुगर ऑफर की और उसने नहीं ली, बट जो चीज उसके काम की नहीं होगी वो क्यों लेगा? सी इम्प्लीमेंटेशन में अपने वहां क्या है, मैं गांव दराज के एरिया में भी जाके काम करता हूँ, तो मैंने एक्चुअली क्या देखा है ना कि भाई हमें उनकी प्रॉब्लम उनके लेवल पे समझनी है। यहाँ क्या हो रहा है, हम उनकी प्रॉब्लम अपने लेवल पे समझते हैं, तो हमें क्या लगता है भाई ये सोल्यूशन इसके लिए परफेक्ट है, ये करेगा तो ये ठीक हो जाएगा, बट वो सोल्यूशन उस एनवायरमेंट इकोसिस्टम में इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं होता है। तो वहां पे वो जो गैप है ना, उसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं दिखता है। तो पॉलिसी ऑन पेपर बहुत अच्छी दिखती है, वो कहते हैं ना कि हम सेल्स में नॉर्मली एक मजाक करते हैं कि एक्सेल पे तो सारे टारगेट्स अचीवेबल लगते हैं, एक्सेल शीट पे तो, बट वो एक्चुअल जब उसको करने बैठते हैं तो 45 to 50% वेरिएशन आ जाता है। Right. Dr. Shariq Nisar, sir, we have seen, among the 3 important sectors, agriculture, service, and manufacturing sector. Agriculture sector is developing with it is you can say underdeveloping in comparison to the other sectors. So what could be the reason, and what are the ways which government can adopt to increase this agriculture? Because still though service sector is increasing, but a lot of rural population is still engaged in agriculture and agriculture allied industry. So what are your suggestions, and why this has been the case that it is increasing with only 3 point something 3 to 4% growth rate is there in agriculture? So Dr. Shariq Nisar. See, if you look relatively, agriculture is the sector that has supported our economy in the last 2 years. So whatever is the growth, the real growth has come only from agriculture sector, क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद जो है फसलें तो बढ़ती रही, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई, इन सर्विसेज नहीं बढ़ी, तो हमारे यहाँ जो भी ग्रोथ आई है, despite all these negative, it is only from the agriculture sector, because we couldn't stop growing crops. That could not be stopped. So wo to despite government, it has gone up. Now if you look at people who have lost jobs in urban areas have gone and become dependent on agriculture, and therefore there is a decrease in per capita agriculture income, because more people are relying on agriculture than before. तो और अगर आप गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर को भी देखेंगे, एग्रीकल्चर की जो बात कर रहे हैं, और जिसमें गवर्नमेंट ने कहा भी था कि हम जो है फार्मर्स की इनकम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, फार्मर्स की इनकम के बढ़ने की बात नहीं है। अगेन दैट इज अ पॉइंट डॉक्टर आदित्य श्रीनिवास हैज वेरी राइटफुली हाईलाइटेड कि वो बात नहीं हो पा रही, बिकॉज मेकिंग क्लेम्स एंड देन इम्प्लीमेंटिंग दोज पॉलिसीज ऑन द ग्राउंड, देयर हैज बीन अ बिग डाइकोटोमी। So, मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी है वो उन चीज़ों पे जा रहा है जो कि गवर्नमेंट के जो बैकलॉग्स हैं, या तो फूड सब्सिडीज़ हैं, या उस तरह के जो हैं एफसीआई के गोदाम में हैं जिनकी अकाउंटिंग वन है। बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो अकाउंटिंग जगलरी है। हम जो है अपना कर्जा अदा कर रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि हमने जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और कर्जा अदा करने के दो बिल्कुल चीज़ें हैं। हमने स्टेट की ग्रांट्स एंड एड को जो है ख़त्म किया है, और हम ये कह रहे हैं कि जो है अब 1 लाख करोड़ स्टेट बोरो कर सकते हैं। तो पहले जो आदित्य का हक था मेरे बजट में उनको ग्रांट मिलने का, वो ग्रांट के बजाय मैं कह रहा हूँ कि आप लोन लीजिए, और फिर आदित्य कल लेंगे नहीं लोन, तो मैं कहूँगा देखिए मैंने इनको लोन ऑफर किया था मगर इन्होंने खुद ही नहीं लिया है। सो we have to understand. You mean to say that the 8% growth of service sector, which is reported in the budget, and around 9% are similar figure for the manufacturing sector, and then 3.2%. So you are agreeing that 3.2 is the real and 8% and something is not real. How could it be? That's a very good question. You have to look at कि growth is always measured with the base. Yes, exactly. So आप जो है 25% डाउन होकर के 8% बढ़ रहे हो, और आप 2.5% से 3.5% जा रहे हो। ठीक है, आप डाउन नहीं हुए थे, आप पिछले साल से इस साल के मुकाबले में, तो व्हेन यू आर कंपेयरिंग यू हैव टू लुक एट द बेस ईयर। तो हम जो है 9% ग्रोथ कर रहे हैं, 9% किस बेस पे कर रहे हैं? जी, डॉक्टर श्रीनिवास, you are closely associated with Bombay Stock Exchange. So my question is,
So whatever the discussion is going on and whatever the budget, allocations and provisions are there, this go in a different direction and the stock market in a different direction. Even we have seen since the crisis, everything was going down, but stock market was it's rising and rising, and it has reached highest level as well during the crisis, right? So why it is like so many questions we get from the our students as well as the friends, why it happens like that, what is the phenomena behind that? सी बेसिकली स्टॉक मार्केट है ना, सी स्टॉक मार्केट के मैं जब बच्चों को सेशन लेता हूँ या इवन इन्वेस्टर्स का, तो मैं एक सिंपल सेंटेंस कहता हूँ, सेंटीमेंट ड्राइव्स लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ड्राइव्स द मार्केट। सो बेसिकली कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि भाई अमेरिका ने 2.5 ट्रिलियन यूएस यानी यूएस फेडरल रिजर्व जो उनकी सेंट्रल बैंक है, उन्होंने $2.5 ट्रिलियन प्रिंट किए थे। अब वहां पे ब्याज दर आप समझ लीजिए कि 0.25% है। तो ये जो पैसा उन्होंने प्रिंट किया, ये पैसा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू सारे एमर्जिंग स्टॉक मार्केट्स में आता है, इंक्लूडिंग ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसलिए आप देखेंगे तो जो हमारे मार्केट्स मार्च 2020 में 42,000 पे इंडेक्स था, बीएसई सेंसेक्स वो गया 25,600 पे, लेकिन उसके बाद वहां से जो उसने रिबाउंड किया, बिकॉज जब हमने लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया तो फॉरेनर्स को काफी अच्छा लगा कि कंट्री लाइक इंडिया वाज एबल टू इंप्लीमेंट लॉकडाउन सो इफेक्टिवली। तो उन्होंने जो मई महीने से बाय करना स्टार्ट किया, आपको ताजुब होगा कि 2020 became the year in which foreigners ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है इंडियन स्टॉक मार्केट में, 1.68 लाख करोड़ रुपीस का। सो बेसिकली ये जो लिक्विडिटी पूरी आई है ना, वो पूरी यूएस से आई है। सेम चीज देखी गई 2021 में भी, 2021 में भी यही सीन रहा, लेकिन 21 के आखिरी 3 महीनों में एफआईआई ने जब के पैसा निकाल लिया, बिकॉज यूएस फेडरल रिजर्व अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा है, वो बॉन्ड टैपरिंग कर रहे हैं। तो ये जो चीप लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट्स में घूम रही थी, वो लिक्विडिटी वापस यूएस जा रही है। सो दैट इज द रीजन आप देखोगे कि भाई स्टॉक मार्केट्स में अभी काफी दिक्कतें आ रही है। और करंटली जो यूएस रशिया का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है यूक्रेन को लेके, एक वो बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है कि अगर वर्ल्ड में कहीं भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसे हम जियोपॉलिटिकल टेंशन कहते हैं, तो उस वक्त शेयर मार्केट हमेशा नीचे जाता है और गोल्ड ऊपर जाता है, बिकॉज गोल्ड इज मोस्ट लिक्विड एसेट आफ्टर कैश। तो बेसिकली ये जो दोनों एसेट क्लास है, गोल्ड और इक्विटी, इसमें आप हमेशा देखिएगा तो ये एक नेगेटिव रिलेशन में चलते हैं, यानी शेयर बाजार अगर वर्ल्ड ओवर नीचे आते हैं तो गोल्ड ऊपर जाता है एंड वाइस वर्सा। सो ये लिक्विडिटी की वजह से मार्केट्स इतने ऊपर गए थे। But that liquidity is not the liquidity created within India. No, that is a liquidity that primarily came from US Federal Reserve. वो हमेशा वहीं से आती है, because dollar is a global currency and they always print dollar as much as they want. Okay. Dr. Aditya. Thank you. Yes, sir, please. Dr. Aditya, total liquidity was to the tune of even 7 trillion. Yes. So if you look at fresh printing, प्लस अदर मेजर्स, वो आकर के इंडिया के कोविड पीरियड में उन्होंने इतने पैसे बनाए कि इंडियन इकोनॉमी के बराबर वो पैसा विड्रॉ करके ले जाएंगे। यस सर, सही कहा। और हमारा जो डोमेस्टिक मोबिलाइजेशन था उसने उनको एग्जिट प्रोवाइड की है। यस एग्जैक्टली, वो लोग भी प्रॉफिट करके निकल गए सर, और सारे शेयर्स इंडियन इन्वेस्टर्स के गले आ गए। ये सही है। 2 साल में चाइना की इकोनॉमी हैज गॉन अप टू द ट्यून ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यस। Is it because we are less sentimental? Is it because we are less sentimental or more sentimental? It's not about sentimental. I would say कि ये जो है ना, हम कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे कि मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा, उस वक्त हमारी इकोनॉमी की साइज क्या थी और चाइना की इकोनॉमी की साइज क्या थी, और आज जो हमारी साइज क्या है चाइना की साइज। तो चाइना हैज एडेड ऑन वन इंडियन इकोनॉमी इन द लास्ट 2 years. Right. So thank you very much, Dr. Shariq Nisar sir, for bringing new inputs to our audience. Now going towards Dr. Abrar Ali. Right now, since couple of years, you have been noting that government of India is relying more on promoting startups to boost up the economy. So how fair it is, means how much you can rely on the startups and this type of organization, because I don't know whether it is well proven or not, but usually we hear that out of 100 only 5 startups will kick off, right? So I think, so what is your right? For me, I think so
I think we see that only unicorns, but if you look at this, last couple of years, last I think 5 years, if you look at that, India have produced highest number of unicorns. So I think India is actually a great, I think, country to start startups and actually created a very good ecosystem. I know the initial benefits are actually are being taken by the top people, students from top institutions like IIMs and IITs, but I think it's going towards that small towns, and I feel that it's a good starting point. And I think you can see that now rural India also, lots of places you will find that lots of universities and school and colleges, they have this entrepreneurship development cells and entrepreneurship incubation centers. I think these are the things are now reaching to tier 2, tier 3 cities. I think we will see the results in next 4 or 5 years down the line. I think as I was talking about the example of Shark Tank, I think I was talking to a couple of students in tier 2 cities, and they all were excited and they all are now inclined to start their own venture. I think it will come up, and I think I'm sure you need, because for every sector to flourish, you need an ecosystem. I think an entrepreneurship also, when people get into entrepreneurship, it will also generate employment and also will develop the economy. So I think I'm fully supporting this kind of initiatives. Sir, यहाँ पे just thank you very much. Wasiullah sir, if you can just allow me to just for 1 minute. Sir, please go ahead. ये जो अपना स्टार्टअप का है ना सर, यहाँ पे एक चीज जो हमें थोड़ी समझनी है प्रैक्टिकलिटी, कि एक है वैल्यूएशन, जिसे ये लोग यूनिकॉर्न्स कह रहे हैं. यूनिकॉर्न है बेसिकली $1 billion का वैल्यूएशन. नाउ वैल्यूएशन इज एन आर्ट, नॉट अ साइंस. यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो ये सारे स्टार्टअप्स कितने सस्टेन करते हैं नेक्स्ट 2-3 साल में, उससे पता चलेगा कि इनका बिजनेस मॉडल्स कितने रोबस्ट थे एंड वेदर दे वर ग्राउंडेड और नॉट. सी वैल्यूएशन तो क्या है ना, कि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो पी मल्टीपल पे देते हैं. सो वैल्यूएशन इज नॉट द सोल क्राइटेरिया कि भाई ये स्टार्टअप सक्सेसफुली गया. अब आप देखोगे कि जब वो बेसिकली वी वर्क करके एक आया था, उसका एक टाइम पे वैल्यूएशन 9 बिलियन गया था, विच गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर योर वर्किंग स्पेस. जब क्रैश आया, ये कोविड की वजह से ऑफिस ही बंद हो गई, उसका वैल्यूएशन 9 बिलियन से 1 बिलियन हो गया. From 9 billion it became 1 billion. So I think I'm not talking about the unicorn. Actually encourages lots of entrepreneurs to start their own venture. That's what I'm saying. नहीं सर, मैं आपको अपोज नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक पॉइंट बोल रहा हूँ कि जो ये स्टार्टअप में है ना सर, ये लोग बेसिकली जो ये हम लोग जो हाईलाइट नॉर्मली करते हो, क्या करते हैं कि भाई इसको इतना वैल्यूएशन मिला. व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोकस इज कि भाई अकेले वैल्यूएशन पे मत जाइए, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं. बिकॉज ये तो क्या हो रहा है, वो कैश बर्न करके अपना रेवेन्यू दिखाते हैं. दे आर बर्निंग लोड्स ऑफ कैश which is again funded by global investors. तो इसमें जो ग्रास रूट लेवल पे जो चेंज आना चाहिए वो कहीं पे आ नहीं रहा है. So that is what just I'm trying to focus on. Yeah, I agree, and I think that is one of the instances. I think the rural areas. We can come back to the valuation point once again to Srinivas sir. Meanwhile, I would like to ask Dr. Shariq Nisar sir. Budget has allocated, they have estimated that they will increase the production up to 30 lakh crore. Okay, which will help in creating 60 lakhs employment and jobs. So what is your take on that? By increasing the production, can the employment be increased? Please unmute sir. That is another very important point that you have highlighted. हम कह रहे हैं कि हम 5 साल में 60 लाख जॉब क्रिएट करने का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. 5 साल का मतलब 1 साल में 12 लाख, मतलब 1 महीने में 1 लाख. इतने बड़े देश में 140 करोड़ की आबादी में 1 महीने में 1 लाख के फिगर को अगर हम कहते हैं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है. ऐसी मार्केट में जहाँ पे हमारी मीडियन एज जो है 28 ईयर है, हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द यूथ आर अनएम्प्लॉयड. अनएम्प्लॉयमेंट इन द अमंग द यूथ इज 50%, यानी 50% लोग ऐसे हैं यूथ में से जो जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रही है. तो ऐसी सिचुएशन में हाउ यू लुक एट दिस जो हो रही है, मैं समझता हूं कि जो डॉक्टर अबरार ने और डॉक्टर आदित्य श्रीनिवास ने बातें बताई हैं, उसमें एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि डॉक्टर आदित्य जो हाईलाइट कर रहे हैं चीज़ें, वो हाईलाइट ये करना चाह रहे हैं कि हमें एक चीज़ का फ़र्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के डिस्कशन में, कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में जो गैप है, ये जो वैल्यूएशन आता है वो सेकेंडरी मार्केट में आता है, और जो
कंपनीज बिजनेस करके पैसे रेस करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं सर्विस गुड्स या सर्विसेज का, वो प्राइमरी मार्केट में आता है। तो अगर मैं जो है वो 50 रुपए जलाने के बाद किसी को ये ख्वाब दिखाऊं कि 5 साल के बाद वो 50 रुपए जो है 500 रुपए हो जाएगा और उस 500 रुपए का कोई मुझे वैल्यू जो है 2500 रुपए दे रहा है, तो वो एक तरह से जो है वो मेरी करंट रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, वो एक सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और हो सकता है कि मैं आज ही या अगले साल तक 2500 रुपए में बेच करके अपने शेयर को निकल जाऊं और वो जो लोग बाद में आएंगे वो शेयर को लेकर के मेरे बैठे रहेंगे, क्योंकि मेरी कंपनी का मॉडल ऐसा नहीं था। तो बहुत सारे जो वैल्यूएशंस हो रहे हैं ना, वो वैल्यूएशन सेंटिमेंट की बुनियाद पे हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी। और बहुत सारे लोग इसलिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कि बाकी लोगों के आने तक जो है हम भी निकल जाएंगे। सो एंटरप्रेन्योर ये सोच रहा है कि मैं 100 रुपए की चीज में 5000 रुपए की इनकम बता करके 10,000 रुपए में बेच दूं। जो 10,000 रुपए में खरीद रहा है वो सोच रहा है कि मैं 50,000 रुपए बता करके निकल जाऊंगा। सो एवरीबडी इज इंटरिंग विथ अ वेरी डेफिनेट प्लान टू एग्जिट बिफोर इट गोज बस्ट। और जब रियल इकोनॉमी की बात होती है तो हमें पता है कि मैं अगर 1000 रुपए का बिजनेस कर रहा हूं तो आप मुझे 1000 रुपए से नीचे कहाँ डाउन करके लाओगे। 1000 रुपए का तो मैं प्रोडक्शन ही कर रहा हूँ, लेकिन 1000 रुपए के प्रोडक्शन पे आप अगर मुझे 10,000 रुपए का वैल्यूएशन देते हो तो 10,000 का वैल्यूएशन जो 9,000 का गैप है वो दैट इज बिकॉज ऑफ सेकेंडरी मार्केट सेंटिमेंट विच इज अगेन एज डॉक्टर आदित्य हैज सेड कि वो बिकॉज ऑफ ग्लोबल लिक्विडिटी। पैसा जो है टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू रियल गुड स्टॉक्स। So when the money goes towards its master, as the things are happening now, then who are left with those stocks? आप 5 साल तक फिर उन स्टॉक्स को लेकर बैठे रहेंगे जिनमें लिक्विडिटी नहीं बचेगी, जिनमें कोई ट्रेड नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसमें हमें थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में कितना फर्क है, क्या हम रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं और क्या हम उसका वैल्यूएशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं। Dr. Srinivas, whatever the points that emerge from this discussion is that our focus has been, rural India. Our focus has been, secondary market. Our focus has been, those institutions or startups which may or may not play, key role. But as far as the urban area, as far as the rural area is there, primary market is there, right, and real economic activity is there. There, our focus is, not up to a mark which requires to be done. So can you suggest a few points through which we can reach out to increase these areas, to have more focus on this and to do something more on these areas? Sir, so basically what I feel that as far as entrepreneurship is concerned, and if you want to really reach at the grassroots level, in any area, primarily need is of good training and a reality check. That is something very important. कि भाई grassroots level पे actual scenario क्या है, उसके लिए हमें किस तरह की ट्रेनिंग देने की जरूरत है, जो बेसिकली एक्चुअल पर्सन ये काम करने वाला है, तब जाके क्या होगा ना कि उसे एक्चुअल रियलिटी का पता चलेगा और वो इसके अंदर अपने आप को ढाल पाएगा। नहीं तो जैसे सर ने कहा कि भाई ये गैप ही इतना बड़ा है कि कोई प्राइमरी मार्केट में मेहनत कर रहा है और उसको वैल्यूएशन सेकेंडरी मार्केट में आता है। सो अल्टीमेटली क्या होता है, दोनों के बीच में रियलिटी चेक बहुत बड़ा गैप खड़ा कर देता है और अल्टीमेटली जिसके हाथ में एंड में वो चीज रह गई वो डेफिनेटली लॉस करेगा। एक बहुत ही अगर हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पेटीएम का आईपीओ 18,000 करोड़ का था, बट बहुत कम लोग शायद ये समझ पाए होंगे कि उसमें से 10,800 करोड़ तो वो जो चाइनीज इन्वेस्टर है जो पहले से अंदर थे उन्होंने अपना माल बेचा है। तो उन्होंने किनको बेचा, हमारे लोगों को 2100 रुपए में शेयर बेच दिए, तो वो तो भाई निहाल हो गए। और हुआ क्या, शेयर की भाव आज 900 रुपए आ गई। तो जिसने 2100 के आईपीओ में लिया वो अब कब उससे बाहर निकल पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे है ना, मेरा हमेशा से ये बहुत स्ट्रॉन्ग मानना रहा है कि भाई हमें ग्लोबल जाना है, लेकिन पहले हम लोकल को तो समझ ले। Right. Dr. Abrar Saiyed would like to add something, I think, to this discussion. Yes, please. I feel that no, there's only few examples if you take and you actually are having very extreme level of idea. I think it's not right. I think we should also understand that these kind of ecosystem are helping. I'm working with a Master Startup Week program run by Master Government, where they support 25 innovative startups every year and give them work order from the government. Like if you not create ecosystem will benefit others also. Like you can have this unicorn and all the points are valid, but I think this ecosystem is also helping lots of people coming from marginalized communities and lots of other sectors also coming forward. So I think we should also see that. I understand your point that unicorns and this all the valuation is a big thing and big hawks also, but I think we should also understand how this
initiatives are helping tier 2, tier 3 cities. I think we should not be having very extreme idea about this. I think we should have a balance. You mean to say that not everything what government is doing wrong? I think something is good. Something, yeah, why not? We should. And I think is this not about this government also, that those initiatives started in early government. So I think, right. Yeah. So. Right. Sir, coming to Dr. Shariq Nisar sir. Sir, despite of all the efforts made by the government in couple of years to, curb the corruption and frauds in banking sector especially, still we are on the risk of, big scams and frauds in banking sector. So what is your take on that? Why still it is a problem, despite of all the measures, RBI and Government of India is taking, though it is not directly related to the budget, but one of the important aspect which I think audience would like to hear from you. देखिए, ये पुराना मरीज है जिसकी डेथ आज डिक्लेयर हुई है, तो मैं इतना ही बताऊंगा, क्योंकि ये जो है ये आज की बात नहीं है और ये 3-4 साल से है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जिस दिन मरीज की डेथ डिक्लेयर हो उसी दिन हम समझें कि वो बीमार पड़ा था। एक पुराना सिस्टम है, पिछले कई सालों से हम जो है लाखों करोड़ रुपए डाल चुके हैं बैंकिंग सेक्टर को रिकैपिटलाइज करने के लिए, क्योंकि जब तक रिकैपिटलाइज नहीं करेंगे वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे नहीं आएंगे और उसकी वजह से उनके ऑपरेशंस पे फर्क पड़ेगा, उनकी रेटिंग पे फर्क पड़ेगा। तो बैंकिंग सेक्टर हैज़ बीन एलिंग फॉर लॉन्ग, एंड because government sector is owner of the banking sector in a large chunk, number one. Number two, government has also been forcing banks to take decisions that was not in the best interest of those same banks many a times. And also because of coronary capitalism की जो बात होती है, हालांकि I am not very much in favor of this word to be used. भाई अगर बाकी लोग अगर पैसे नहीं कमा रहे हैं तो we cannot stop big industrialists to earn money. They will earn money. They are being very rational about it. They are not ashamed of earning money. उनकी वैल्यूएशन अगर बढ़ रही है पूरी स्टॉक मार्केट की वजह से, तो what can they do? लेकिन ये है कि मैं जो समझ रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर का जो प्रॉब्लम है वो पेरेनियल प्रॉब्लम है, और जब तक हम जो है बैंकिंग सेक्टर में अपने इन्फ्लुएंस को, गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस को बंद नहीं करेंगे, तब तक जो है वो प्रॉब्लम होती रहेगी। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट हैज़ बीन यूजिंग पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस for meeting its own political objective, and that has caused huge inefficiency in the financial sector, and that is true. अभी आप देखिए ना, 3 साल से हम LIC जो हमारा बेस्ट है उसको नहीं बेच पा रहे हैं, हम जो है RBI से जो है रिजर्व को हर साल लेते चले जा रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। एक चीज़ मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि अबरार साहब का जो पॉइंट है, let me make it very clear कि issue is about the valuation, issue is not about the importance of entrepreneurship. देखिए, जब गवर्नमेंट जॉब नहीं क्रिएट कर पाएगी, इकोनॉमी जॉब नहीं क्रिएट कर पाएगी, तो लोग जो है कुछ ना कुछ तो करेंगे, और कुछ ना कुछ करेंगे तो ये जो है एडवर्स सिचुएशन में जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रही है, जो जुगाड़ के कल्चर के बावजूद लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और बड़ी रेजिलियंस दिखाई है लोगों ने, वो जो है वो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि इन एडवर्स सिचुएशन में भी जो है हमारी सोसाइटी के बॉटम ऑफ द पिरामिड, जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई तकरीबन 6-6.5 करोड़ लोग बॉटम जो पॉवर्टी लाइन में भी नीचे चले गए हैं, इन लोगों ने रेजिलियंस दिखाई है। जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है वो हमारी मजबूरी भी है, अगर हम उसको सपोर्ट ना करें तो हम कुछ और भी नहीं कर पाएंगे। तो आज की तारीख में अगर हमारा जो मेन सेक्टर है, जो फॉर्मल सेक्टर है, वो जॉब नहीं दे पा रहा है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी कॉस्ट को लेकर के, तो जो बाकी लोग बचे हुए हैं वो जाहिर सी बात है कि अपने जीने खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, और अगर गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करती है तो ये उनके लिए बहुत बड़ी उम्मीद की बात है। एंड आई एग्री विथ यू in the current circumstances that we have and that we find ourselves, there is no better hope than creating entrepreneurship, because that is exactly what US did after 2009-10 crisis. अगर आप देखेंगे तो जंप स्टार्ट का जो कॉन्सेप्ट था या अमेरिका में, दैट इज बिकॉज कि फाइनेंशियल सेक्टर के में जॉब गई, रियल एस्टेट सेक्टर में जॉब गई, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप फाइनेंशियल सपोर्ट हम आपको देंगे और आप जो है अपना अपना काम करो। तो फिनटेक इज डेवलपमेंट एंड आउटकम of those financial sector crisis, और फिनटेक ने फिर पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को या पूरी दुनिया के बिजनेस करने के तरीके को बदला है। तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ भी जो क्राइसिस है, अगर एंटरप्रेन्योरशिप उसमें इवॉल्व होती है तो दैट कैन क्रिएट लॉट ऑफ गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी, एंड दैट इज द ओनली होप आई हैव एट द मोमेंट, disregarding any other sector's contribution.
And regarding, please. Sir, I think the current GEM data recently showed, I think अभी थोड़े हफ्ते पहले ही उसका report आया 2022 का, it shows that India में अभी ज़्यादातर, so I think if you look at the past 10 years data, जहाँ पे था कि mostly the entrepreneurship was necessity based, entrepreneurship हो रहा था इंडिया में, अभी now is opportunity driven entrepreneurship. So more than 70% of the popular entrepreneurs are actually showing the opportunity driven entrepreneurship. So I think what I'm saying that I agree with your point. In fact, when I teach entrepreneurship, I encourage students to go to family businesses and traditional industries. I'm not telling them to go to a fintech or a tech startup, but what I'm saying that these all the initiatives are somewhere helping in long run to this kind of small tier 2, tier 3 cities and also creating ecosystem. Like जैसे मैं कह रहा था MSW का प्रोग्राम है जिसमें 25 जो स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सपोर्ट करती है, वर्क ऑर्डर दिलाती है, किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, फंडिंग नहीं है. दे आर ऑल वेरी इनोवेटिव स्टार्टअप. कोई सस्टेनेबिलिटी में काम कर रहा है, कोई क्लाइमेट चेंज में काम कर रहा है. आई थिंक वेरी इनोवेटिव स्टार्टअप्स, नो फंडिंग, नो वैल्यूएशन, but they are doing, but they got the benefit of the ecosystem. That's what I'm saying. Right. Meanwhile, I think Aditya Srinivas has, no, yes, sir, I'm there. He's there. Yeah. Dr. Srinivas, this budget has, placed sunrise sectors on top of, priority, right? As far as the supporting of the government is concerned. So what is all about? See, basically, if you see several allocation, if you go from the allocation, defense was a sunrise sector because there 3.85 lakh crore has been given. Then basically agriculture got more than around 2 lakh rupees, 1 lakh crore rupees. Rural development got more than 2 lakh crore. See, इसमें allocation में तो ऐसा है ना सर कि भाई as per basically the need of the hour and the priority allocations have been given. But as I always say that we need to implement the things. See, implementation और planning ये दोनों में काफी फर्क होता है. सी चाइना ने जितना प्रोग्रेस किया दे आर वेरी गुड इन प्लानिंग एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन, जबकि हमेशा हमारा रिकॉर्ड ये रहा है कि वी आर वेरी गुड प्लानर्स, बट इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आ जाते हैं. सो बेसिकली जो कहीं भी सनराइज सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने जो फोकस दिखाया, जैसे भाई मेक इन इंडिया में उन्होंने ये किया है कि भाई आप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कंपनी डालो तो आपको 2024 तक सिर्फ 15% कॉर्पोरेट टैक्स रेट लगेगा. नाउ दैट्स अ वेरी वेलकम मूव, बट उसमें हम कितनी फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो एक्चुअल पॉइंट हमें जिसपे वर्क करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा और उसको कहीं ना कहीं लिंक करना पड़ेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से. कि एक्चुअली अगर एंटरप्रेन्योर को ईज होता है तो डेफिनेटली ही विल कम एंड डू बिजनेस, बट इफ ही इज नॉट कंफर्टेबल देयर विल बी अ चैलेंज. जैसे अगर आप एक सिंपल एग्जांपल देखें कि भाई टेस्ला है, तो टेस्ला कोशिश तो कर रहा है इंडिया में अपना प्लांट डालने में, कई स्टेट गवर्नमेंट से भी बात हो रही है उसकी, बट हर जगह कहीं ना कहीं उनकी जो डिमांड है कि भाई आप इंपोर्ट ड्यूटी एकदम से घटा दो, और गवर्नमेंट का जो व्यू है कि वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज उससे डोमेस्टिक कंपनीज को प्रॉब्लम होगा. नाउ दैट इज समथिंग वेयर बाय यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ओन नेशनल इंटरेस्ट आल्सो एंड एट द सेम टाइम इनवाइट ह्यूज कंपनीज आल्सो. सो यहाँ पे एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट खेल वील हैव टू गो बाय फाइन बैलेंसिंग एक्ट कि जहाँ पे एंटरप्रेन्योर को भी कंफर्ट आए बट एट द सेम टाइम डोमेस्टिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो. Okay. Just adding to your point, one of the experts says related to GVCs, because we are downstream, country as far as the GVC is concerned. So where we import certain products, intermediary products, then we manufacture the finished goods and we will export it, right? So this import duty problem will affect even our GVCs as well. That is what some of the experts have identified. So do you agree with this point, that because of the high import duty on the intermediary goods which are required for finished product which we planning to export outside? Here what I feel that in Make in India, see, we need to distinguish two things. One, either are we just trying to focus being an assembly point only? See, assembly में क्या होता है, आप कोई चीज इंपोर्ट करो, उसमें कुछ अपना मिला लो, फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर दो. और एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरिंग है, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है कि भाई हम यहाँ पे अपना इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग करें. सो ये दोनों में अगर आप लॉन्ग टर्म देखो तो भाई इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग विल ऑलवेज बी मोर बेनिफिशियल एंड मोर प्रोबेबली कॉस्ट इफेक्टिव. आई एम यूजिंग द वर्ड प्रोबेबली. कि हम अगर अच्छे से यहीं पे चीजें बना सके, so that will help our economy to grow. It will create jobs at the grassroots level and at the same time prevent precious foreign exchange reserves also.
सो यहाँ पे हमें ये समझना है कि भाई क्या हम असेंबली पॉइंट बनना चाहते हैं कि भाई हमने कुछ इंपोर्ट किया, कुछ अपना मिलाया और बेसिकली हमने कहा कि भाई हमने मैन्युफैक्चरिंग कर डाला, या हम सच में कोई चीज मैन्युफैक्चर करके उसे बेसिकली एक अच्छी क्वालिटी का ये दे सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमारे सूरत में LNT का प्लांट है, तो वहां पे पूरा तेजस टैंक पूरा इंडिजीनियसली डेवलप हुआ था और आज वो पूरा सक्सेसफुली इंडियन आर्मी में ऐड हो गया है। So that is the actual manufacturing make in India concept rather than we, जैसे Foxconn का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो वो तो सिर्फ एक असेंबली प्लांट है कि जहां पे हमने चीजें बाहर से मंगवाई, उसको असेंबल कर दिया और कहा कि भाई हमने ये बना दिया है। तो ये दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है। अच्छा, हाँ। Coming to Dr. Shariq Nisar, sir, government has announced, digital currency which will be issued by RBI. So, what do you think? How it is going to impact on overall economy? Will it have a positive impact or not? Again, we are going out of budget. लेकिन ठीक है, अगर आपके ऑडियंस अगर यही सवाल पूछ रहे हैं तो we can always take it. See, गवर्नमेंट जो है वो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में सिर्फ चाइना और इंडिया हैं जो डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम ऑलरेडी जो है जितना डिजिटल पेमेंट हो सकता है UPI वगैरह के थ्रू हो ही रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि रुपए का जो है एक डिजिटाइज्ड वर्जन हो, और वो जो है हम compete करना चाह रहे हैं प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी से, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि देखो हम भी उनके बराबर आ सकते हैं और वो भी चीज़ हम ला सकते हैं। क्योंकि हमें डर है कि हम फिएट करेंसी से लोग जो है वो प्राइवेट डिसेंट्रलाइज करेंसी की तरफ मूव कर रहे हैं, और जो है उसमें दो नुकसान है। एक तो ये है कि लोगों का फाइनेंशियल नुकसान है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट की जो करेंसीज है उनका एक सौतन क्रिएट हो रही है, जिसको हम उर्दू जबान में कह सकते हैं कि है, और दैट इज नॉट गुड फॉर द ट्रस्ट इन द सेंट्रलाइज्ड फिएट करेंसी। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि इस वजह से किया जाए। मैं समझता हूँ कि दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो अभी वेट एंड वॉच कर रही हैं, सिवाय इंडिया चाइना के, चाहे वो US हो, यूरोप है और हो। लेकिन छोटे छोटे कुछ कंट्रीज हैं जिनकी अपनी करेंसी की कोई बहुत खास वैल्यू नहीं है। दे हैव बीन वेरी क्विक इन ट्राइंग टू शो दैट दे आर फार अहेड ऑफ द कर्व एज फार एज अडॉप्टिंग डिजिटल करेंसी इज कंसर्न। हैविंग सेड दिस, इसके अलावा भी कुछ एडवांटेजेस हम समझ सकते हैं। रुपए का जो फ्रिक्शन की कॉस्ट है, रुपए की जो प्रिंटिंग की कॉस्ट है, रुपए का जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, जो सोसाइटी में ले जाने तक की है, अगर डिजिटल करेंसी पे लोग मूव करते हैं तो कुछ कॉस्ट सेविंग हमारे पास होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कॉस्ट सेविंग के बजाय में जो अभी अनसर्टेनिटी है लोगों के जहन में, इसको मद्देनजर रखते हुए ये बेहतर होगा कि हम वेट करें। लेकिन मुमकिन है कि RBI के पास वैसी इंफॉर्मेशन हो जिसकी बेसिस पे वो चाह रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इसको पायलट टेस्टिंग करना चाहिए, ताकि देखें कि लोगों में एडॉप्शन इसका कैसा है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए कि इंडिया जो है दुनिया की सबसे बड़ी गैम्बलिंग मार्केट है क्रिप्टो करेंसीज की। पूरी स्टॉक मार्केट में अगर हमारे पास 7 करोड़ इन्वेस्टर हैं तो इंडिया में क्रिप्टोज में जो है 2 करोड़ इन्वेस्टर हैं। अब 7 करोड़ इन्वेस्टर अगर हमारे पास 1874-75 का बना हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वो जाकर के 7 करोड़ इन्वेस्टर तक अब पहुंचा है, और पिछले 5-6 सालों में 7 सालों में जो है 2 करोड़ अगर क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स हैं, तो यू कैन इमेजिन कि जिस तरीके से लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है, जिस तरीके से लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, दैट इज अ ह्यूज रिस्क इम्पेंडिंग अगर कुछ बुरा होता है तो। एंड अगेन द ब्लेम विल कम ऑन गवर्नमेंट, क्योंकि जो लोग आज गेम खेल रहे हैं वो कल गवर्नमेंट को ही ब्लेम करेंगे कि जो है हमें प्रोटेक्ट नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू play very safe on this, and government is trying to dissuade people by two things. एक तरफ तो ये कह रही है कि हम डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे, दूसरी तरफ उसने लीगल न करने के बावजूद क्रिप्टोज को लीगल भी नहीं किया है और टैक्सेस लगाए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप जुआ खेलो तो 30% हमें भी दो, हालांकि जुए को भी हमने जायज नहीं करार दिया है। So no, but Dr. Aditya Srinivas, as pointed out by Dr. Shariq Nisar, that it is proposed to tax the investment on cryptocurrency. So can we consider it as a positive step taken by the government to legalize the cryptocurrency? No. See, the finance sector. No, because why I am asking this in general perspective, among the general population, the perception is in that way that because government is taxing, it means it is somehow going to make it legal. सर, बजट के तुरंत बाद फाइनेंस सेक्रेटरी ने बहुत ही क्लियर कट एक सेपरेट इंटरव्यू में ये चीज क्लियर कही है कि क्रिप्टो करेंसी इज नाइदर लीगल, नेवर इट विल बी अ लीगलाइज्ड इन इंडिया, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया में जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी वही एक लीगल टेंडर
लेंडर होगा। थर्ड, दे हैव क्लियरली टोल्ड कि आप जो लॉसेस करते हो इसमें पूरे लॉस की जिम्मेदारी क्लाइंट की है, प्रॉफिट किया तो 30% टैक्स भरना है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आरबीआई का जो मेन कंसर्न है ना क्रिप्टो करेंसी में, वो ये सब के अलावा जो मेन कंसर्न है उनका ये है दैट इट कैन बी वाइडली यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। और यहाँ पे मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये भी एक चीज जो सो कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स उनको बताना चाहता हूँ कि भाई बेसिकली जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, सेटलमेंट गारंटी फंड होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, नेटवर्थ क्राइटेरिया होती है। तो ये जो सो कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस अपने आपको कह रहे हैं, इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपका पैसा डूबा तो उसका रिकोर्स का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। सो देन हाउ कैन यू कॉल इट एज बेसिकली समथिंग विच यू शुड टेक रिस्क अबाउट गेटिंग इट। और सर इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल है ना वो बहुत ही बड़ा है, इसलिए आरबीआई का मेन कंसर्न है। आप एक सिंपल देखिए कि इतना चेक्स एंड बैलेंसेस होने के बावजूद भी अगर बैंकिंग सिस्टम में इतनी हमको दिक्कतें आती है चीजें कंट्रोल करने में, तो यहाँ तो कोई इसका कंट्रोल मैकेनिज्म ही नहीं है, तो यहाँ तो हम कहाँ जाके रुकेंगे। So it means you are giving a signal to the investors from the participants to be careful. If government is taxing, it not necessarily mean you are protected. Sir, it is very clear it is not legal. You will a definitely very end important up in point which we are thankful you have brought a very important point into the discussion. Right. It has been, we are running out of time. More, few minutes are there for the webinar. There are so many questions, but we have to, come towards the conclusion. Last question, which I would like to pose to three of you. This terminologies, you might be aware of that Amrut Kal and next 25 years and India at 100. So all the budget and economic survey and all the discussions of the government and India ANC especially, who is supporting, enthusiastically to these slogans. So what is your take on that? How you view this, slogan? Starting from Dr. Shariq Nisar. एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि हमारी गवर्नमेंट माशाल्लाह पूरी दुनिया में जो है वो टर्म को क्वाइन करने में बहुत आगे है। पूरी दुनिया को सीखना चाहिए एंड दे आर वेरी गुड एट क्वाइनिंग टर्म्स। तो जब दुनिया में वर्स्ट पेंडेमिक है, वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस है और वर्स्ट हेल्थ क्राइसिस है, वर्स्ट जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, हमारे देश की इकोनॉमी इससे ज़्यादा गिरी नहीं थी, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इससे ज़्यादा कभी बढ़ी नहीं थी, हमारे देश में इससे ज़्यादा जो है वो अदर देन वॉर पीरियड में, पीस पीरियड में इससे ज़्यादा जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस नहीं थे। उसमें भी इस गवर्नमेंट का हमारी कॉन्फिडेंस देखने लायक है कि वो इस पीरियड को भी अमृत काल कह सकते हैं और लोग उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। आई थिंक ऑन द पॉजिटिव साइड इट इज़ गुड कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। Otherwise, I don't think that there is any Amrut Kal. It doesn't mean that I don't want to, but then I as an economist, as a student of economics, I want to be realistic, and reality is not good. And therefore, I would say that ये लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है कि जिस वक्त समाज में 80-85% लोगों की इनकम घटी हो, जिस वक्त समाज में 60-65 लाख लोग जो है वो गरीबी के रेखा से नीचे चले गए हों, जिनको गरीबी की रेखा से ऊपर लाने में हमारे 25 साल, 30 साल, 40 साल लग गए, उस पीरियड को अगर हम अमृत काल कहेंगे तो फिर बाकी अच्छे पीरियड को हम क्या कहेंगे? So I don't think that this has got any semblance except that government is trying to project a very brave face in a very adverse situation. Dr. Abrar Ali Saiyed, your take on this point. I am coming to Aditya Srinivas sir in a while, because I want to have a that is why I'm giving chance to Dr. Final words. Yeah, final words. So I think for me, I think is this 100-year something that what the projection is 25 years like blueprint and a kind of growth perspective she is showing our Prime Minister. I think it's a kind of hatili mein chand dikhana wala mamla hai. I think very unrealistic. And second is, as I think for me, every country grow economically, but also there should be growth, should be inclusive. For me is how the country is growing, whether some capitalist people will grow and then the country will not grow without including minorities, women, and lots of other marginalized communities. So I think for me, again, as I think Nisar Saab has agreed, very rightly said, this is something is not very, very lucrative and not very, very promising. But I think, yeah, but the Jumla party always comes with some Jumla. So
Yeah, here we are. Yeah, Dr. Srinivas, sir. Now it's your now. So basically, as sir has already and aptly said, it is nothing but trying to put a brave face in the adverse situation. But yes, we have to understand that reality, things are difficult, things are very grim at the grassroots level. See, यहाँ पे क्या हुआ है कि कोविड में है ना, पैसे वाले और ताकतवर हुए, ग्लोबली ये फिनोमिना देखा गया और इंडिया में ये फिनोमिना और भी स्ट्रॉन्ग रहा. तो आज ही अगर आप एक आर्टिकल देखेंगे यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में छपा है कि भाई लग्जरी चीजों की ये बढ़ी, लेकिन नेसेसिटी आइटम्स की सेल 24% घटी है, 24% सर. एंड ट्रस्ट मी, मुझे रोज 4 बच्चों के फोन आते हैं, 4 स्टूडेंट्स के साथ कहीं जॉब का कुछ है क्या, कोई इंटर्नशिप है क्या. सो बेसिकली यहाँ पे कैसा है ना सर के वो कहते हैं बस आपको टर्म तो कोई भी अच्छा सा कॉइन कर दो और उस पर एक थीम बना दो, बट वो तो जिसपे बीतती है उसको पता चलता है. वो कोविड में हम कहते हैं भाई कुछ नहीं होगा, बट वो जिसके घर में आदमी गुजर गया वो तो वही जानता है कि क्या हुआ है एक्चुअली. सो इट इज समवेयर वी हैव टू टेक रियलिटी. एंड मेरा तो हमेशा यही मानना है, और मैं आप तो शारिक साहब आप तो जानते भी है कि भाई मैं ग्रासरूट लेवल पे काम करने वालों में से. सो व्हेन आई गो इवन टू ऑर्फनेज हाउसेस एंड व्हेन आई गो टू बेसिकली एट द लोएस्ट लेवल ना, ट्रस्ट मी थिंग्स आर रियली नॉट गुड, रियली नॉट गुड. यहाँ पे एक्चुअली तो क्या हुआ है कि मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास हो गया है, लोअर मिडिल क्लास पुअर हो गया है. बस फायदा सिर्फ रिच को हुआ है, रिच हैज बिकम सुपर रिच. Right, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. With a few concluding points, we will try to conclude this webinar. That the points which have emerged from the discussion is that whatever the budget has been presented or the outlook presented in the economic survey, not everything is good, not everything is bad. It is somewhere between that. There are two Indias, one is prosperous, another is in distress. So the balance between projecting both the Indias is not there. There is a huge gap. What has been presented is the prosperous India, and which is even in futuristic points. But what has not been presented or touched upon is the distressed India, the India which still is suffering from economic downturn in terms of employment, production, and so on and so on. So what is required is to balance between them, to touch upon the points which have not been touched in the budget, not the current or previous budget. So from this forum, we would like to suggest to the government of India that to take some policy decisions related to the distressed India, especially rural India. Then thank you very much for all the 3 panelists for your expert views. Really, I hope the participants have enjoyed your views and enlightened from the work. So, and thank you very much to all the participants for joining us from across the country. With a positive note, hope we will prosper in future in realistic term. I would like to say thank you one and all. On behalf of the Rifah Chamber of Commerce and Industry. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting us. Thank you very much, Dr. Abrar. It was pleasure knowing you, and I would request the organizers to connect both of us formally, क्योंकि Dr. Aditya के साथ तो हम लोग connected हैं, and Dr. Abrar से भी फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह इनके knowledge से. सर शारिक सर जस्ट एक प्लेटफॉर्म पे छोटा सा शेयर करना चाह रहा था कि आई फॉर्मली डिसाइडेड टू स्टार्ट माय ओन एनजीओ. सो बेसिकली एक प्रोसेस स्टार्ट किया है, दैट विल बी एन एनजीओ इन एक्चुअल रूरल एरिया. वो जिले की आबादी ही 3 लाख है सिर्फ. सो वहां पे आज ही मैंने एप्लीकेशन की है, तो इंशाल्लाह अगर 3 महीने में 2 महीने में वो बन जाता है तो ग्रासरूट लेवल पे एक्चुअल जाके और अच्छे से काम कर पाएंगे. तो तब थोड़ा आप सबका सपोर्ट चाहिएगा टू हेल्प द नीडी एंड द पुअर. Sure, sir. It will be our pleasure and honor, sir. वेरी गुड डॉक्टर आदित्य, आप बहुत मेहनत से काम करते हैं, मुझे पता है. और सर, मैं मुझे तो सबके सामने आपकी तारीफ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये कि डॉक्टर आदित्य जो है वो बहुत सारे यतीमों की परवरिश करते हैं और उनके साथ खाना खाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं. कुरान की एक तालीम है कि कौन जो है यतीमों को खाना खिलाएगा. डॉक्टर आदित्य जो है उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं और बड़े खुशी के साथ उन गरीब बच्चों के साथ नाश्ता करते हैं, इतवार को खाना खिलाते हैं उनको और उनको पालते हैं. मे गॉड ब्लेस हिम एंड हिज फैमिली. थैंक यू सर. God bless you, sir. God bless you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, and all. Thank you very much. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Alaikum salam.